Hello students, today we are going to see mass energy equivalence. Mass energy, and we all are familiar with this relation E is equal to mc square. आज हम E is equal to mc square derive करने वाले हैं. So for that let us begin. Let a particle of mass m moving with a velocity v is displaced by a distance dx by applying a force capital F on it. अभी क्या कर रहे हैं हम, एक पार्टिकल है. अब पार्टिकल का मास क्या है, मास m है, एंड मूविंग विथ वेलोसिटी, ये मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस. ये अभी न्यू यहाँ पे आगे ये डिस्प्लेस हुआ है dx. So this is small diagram. So the work done by the force that is increase in kinetic energy, वर्क डन बाय द फोर्स हम निकाल रहे हैं. जो वर्क डन है दैट इज नथिंग बट हियर इट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. वी विल राइट डी के इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, विच इज इक्वल टू डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन है. वी नो दैट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स भी हम जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, या फिर डी डी टी ऑफ एम इंटू velocity, क्योंकि mass dv by dt is nothing but your acceleration. So here we will write d dt of mv into dx. Till now हमने ये कंसिडर किया है कि mass is constant, therefore इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है. बट हियर इन दिस केस इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो इसमें हम चेन रूल लगाएंगे. तो फर्स्ट dv by dt प्लस सेकेंड dm बाई dt. वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़ीरो नहीं है. टिल नाउ हमने ये कंसिडर किया था कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो हम डी डी टी, हम मास का किसी का ये हम कांस्टेंट कर लेंगे तो वी विल गेट ज़ीरो. बट हियर द केस इज नॉट लाइक दिस. अभी हम स्मॉल अरेंजमेंट करेंगे. ये डी एक्स को अंदर लेके चल रहा है. सो एम यहाँ पे डी वी को हटा के डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इंटू डी एम. हम बट वी नो दैट यहाँ पे एक और ये है डी एक्स अपॉन डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी v. इसलिए हम ये अरेंजमेंट कर रहे हैं. नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट. सो वी विल ऑब्टेन m. अभी ये किसके बराबर हो गया है, v इंटू डी वी प्लस v इंटू डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम डी के इज इक्वल टू. सो डी के क्या है, इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पे मिल गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ बट हम ऑलरेडी हमें रिलेशन पता है, बट वी नो दैट m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. m0 is the rest mass and m is the relativistic mass. So m is equal to m0 upon under root 1 minus v square c square. Simply squaring both sides, m square
इज इक्वल टू m0 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम रीअरेंजमेंट करेंगे। m स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर। नाउ m स्क्वायर, c को यहाँ लेके जा रही हूँ मैं, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर। m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c स्क्वायर, विच इज इक्वल टू m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू m0 स्क्वायर c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, वी आर गोइंग टू डू द पार्शियल डिफरेंशिएशन। ऑन पार्शियल differentiation of equation 2, we get 2mc square into dm minus 2mv square dm minus 2m square v into dv is equal to, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि दिस इज़ ऑलरेडी ए कांस्टेंट, m0 भी कांस्टेंट है, तो हम उस पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा। नाउ वी कैन सी 2 इज़ कॉमन, हियर 1m इज़ ऑल्सो कॉमन, वी आर रिमेनिंग विथ c स्क्वायर dm माइनस v स्क्वायर dm माइनस mv dv इक्वल टू ज़ीरो। अब ये दोनों को मैं यहाँ लेके जा रही हूँ, तो c स्क्वायर dm इज इक्वल टू mv dv प्लस v स्क्वायर dm, इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 जो था mv dv प्लस वी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू डी के था, इंक्रीज इन एनर्जी था इक्वेशन नंबर 1, तो हम इसको मैं इसे रिप्लेस कर सकती हूँ बाई डी के। therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 we get dk is equal to c square dm, equation number 4। hence gain in kinetic energy in acquiring the velocity v from rest, that is in increasing the mass of the particle from m0 to m। अभी हम क्या देख रहे हैं, हेंस गेन इन काइनेटिक एनर्जी इन एक्वायरिंग द वेलोसिटी v फ्रॉम रेस्ट, दैट इज इन इंक्रीजिंग द मास ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम m0 टू m इज गिवन बाई, तो हमें गेन इन काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, मास कहाँ से बढ़ रहा है, m0 से m की ओर जा रहा है, इज इंटीग्रेटिंग करेंगे हम, इट इज़ ए कंटिन्यूस, दैट्स वाई c स्क्वायर dm। तो यहाँ पे मिल जाएगा c स्क्वायर, यहाँ पे m0 टू m which is equal to c square m minus m0। ये क्या है, k है, k is equal to, this is equation number 5। the equation 5 gives the expression for the
kinetic energy of the particle at relativistic velocities. ठीक है. इक्वेशन 5 गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटीज. अब हम देखेंगे, हम एक कंडीशन डालेंगे, जब v 0 के बराबर रहेगा तो जो रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल रहेगा दैट विल बी इक्वल टू m0c². बट at v is equal to 0, the rest energy of the पार्टिकल, रेस्ट मास गलती से बोला, रेस्ट मास ऑफ द एनर्जी जो रहेगा, रेस्ट मास को हम दूसरे नाम से भी बोल सकते हैं, इट्स द पोटेंशियल एनर्जी is equal to m0c². Therefore, total energy of the particle E जो रहेगा which will be equal to kinetic energy plus rest एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी हमने ऑलरेडी देखा, c² m-m0 हमें मिला था, प्लस रेस्ट जो एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू m0c². ना ओपन करेंगे, c² m माइनस c² m0 प्लस m0c². यू कैन ऑब्जर्व दिस टू आर इक्वल, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एंड वी आर रिमेनिंग विथ E is equal to mc². The above equation E is equal to mc² is called the Einstein's equation of mass energy equivalence. Thus इस इक्वेशन से हम क्या देख सकते हैं, मास एंड एनर्जी दे आर इंटरचेंजेबल. मास एंड एनर्जी आर interchangeable if change in energy, del E energy is converted into the mass, the mass obtained, जो मास हमें मिल रहा है, विच इज del m इज इक्वल टू del E अपॉन c². इसी इक्वेशन में del E इज इक्वल टू del m c², तो del m इज इक्वल टू del E by c². एंड इफ del m mass is converted into energy, we get del E is equal to del m dot c². Thus, mass can be converted into the energy, and energy can be converted into the mass. Thank you.